मॉर्निंग रोहित, अनु, मोहन, प्रीति, पूजा. Good morning. Today the topic of our discussion is American literature, history of major writers and their work, a complete guide for STET, CTET, READ and UGC NET. We will discuss all about in this video. Quotation of the day is ability is what you are capable of doing. Motivation determine what you do. Attitude determine how well you do it. Ability is what you are capable of doing. जो एबिलिटी है इसका मीनिंग है जो आप कैपेबल हो कुछ भी करने के लिए आप जो कैपेबल हो ये एबिलिटी है. जैसे आप अगर कोई टेस्ट है उसको क्वालिफाई करने के लिए अगर भगवान ने आपको कैपेसिटी दे रखी है तो ये आपकी एबिलिटी है. मोटिवेशन डिटरमाइन व्हाट टू डू. और जो मोटिवेशन है ये डिटरमाइन करता है कि आपको क्या करना है. इसका मीनिंग है कि आपके पास ज्यादा माइंड नहीं है लेकिन आपके पास मोटिवेशन है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है तो ये आपका क्या मोटिवेशन है. एंड एटीट्यूड डिटरमाइन हाउ वेल डू इट. और एटीट्यूड ये है कि आप उसको किस तरह से इसको करोगे. तो एटीट्यूड ये है आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे के साथ जब उसको जीना स्टार्ट कर देते हो तो आप उस चीज को प्राप्त कर लेते हो. जैसे जो आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एटीट्यूड बनाना होगा. तो उसमें आपको पॉजिटिव पॉजिटिव आउटलुक देना होगा कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और इसके लिए मैं हर पॉसिबल जो मेथड है उनको यूज करूंगा. मैं यूट्यूब का हेल्प लूंगा, मैं कोर्स लूंगा. तो हर तरह से जो पॉसिबल वे से इस एग्जाम को करने की जो कोशिश करोगे उसमें पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो ये एटीट्यूड है. तो एबिलिटी बाय बर्थ अगर आपको कोई कैपेसिटी मिलती है तो उसके साथ आप कोई वर्क करते हो तो ये आपकी एबिलिटी है. मोटिवेशन आप उस एग्जाम को उस वर्क को क्यों करना चाहते हो उसको करने के लिए आपको क्या इंस्पायर कर रहा है जिसके लिए उसको आप उसको करना चाह रहे हो. और एटीट्यूड आप किस पॉजिटिव आउटलुक के साथ उस एग्जाम को उस वर्क को कर सकते हो तो ये डिसाइड करता है. तो ये तीनों ही चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक. American literature is one of the most diverse and influential literary tradition in the world. It reflects the historical, cultural, social, political development of the United States from religious writer of the colonial period of contemporary work addressing race, identity, technology, globalization. American literature has continuously evolved with changing time. It celebrates themes such as freedom, democracy, individualism, the American dream, quality, and human resilience. Unlike English literature, which developed over many centuries, in Britain, American literature established its own identity after colonial period. It gradually moved away from British literary tradition and created a unique voice that reflects American experience, landscape, and cultural diversity. जो अमेरिकन लिटरेचर है ये क्या है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. ये हमारी जो इन्फ्लुएंस लिटरेरी ट्रेडिशन है इन द वर्ल्ड इनसे रिफ्लेक्टेड है. इट रिफ्लेक्ट हिस्टोरिकल यह है हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल और सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. और जो यूनाइटेड स्टेट है इसका जो वर्क है इसमें जो लिटरेचर है इसने ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है. तो जो अमेरिकन लिटरेचर है उसकी स्टडी हम इस आज कर रहे हैं. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. The root of American literature can be traced back to early 17th century when European settlers established colonies in North America. जो रूट है अमेरिकन लिटरेचर की जो रूट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है अर्ली 17th सेंचुरी से. अर्ली 17th सेंचुरी से स्टार्ट होती है. एंड सेटलर एस्टेब्लिश द कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. जब जो यूरोपियन है उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में अपनी कॉलोनी को एस्टेब्लिश कर लिया था. Initially, literature mainly considered religious sermons, journals, letters, travel narratives. After the American Revolution, writer begins expressing national identity, patriotism, and democratic ideals. During the 19th century, Romanticism, Transcendentalism, Realism, natural flourished, producing some of the American greatest literary masterpieces. The 20th century witnessed modernism and the Harmon Renaissance, postmodernism, and multicultural literature making American literature globally influenced. Major characteristics of American literature emphasize the individual freedom and independence. इसकी जो फर्स्ट characteristics है emphasize ये individual freedom और independence को emphasize करता है. Celebrates the democracy and equality. ये democracy और equality को celebrate करता है. Exploration of American dream. ये American dream को explore करता है.
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर, नेचर के साथ कनेक्शन को शो करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, ये कल्चरल डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरल के बारे में भी है। सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिफॉर्म, इसमें सोशल क्रिटिसिज्म और रिफॉर्म को भी शो किया जाता है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ एवरीडे लाइफ, और यह है एवरीडे लाइफ का रियलिस्टिक पोर्ट्रेट देता है। एक्सपेरिमेंटेशन विद लिटरेरी स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, और यह एक एक्सपेरिमेंटेशन है लिटरेरी स्टाइल के साथ और टेक्निक्स के साथ। Major literary periods of English literature. Now we will discuss about the major literary periods in American literature. The colonial period 1607 to 1775. The colonial period marked the beginning of American literature. Most writings were influenced by Puritan beliefs and focused on religion, morality, survival in new lands. Diaries, sermon journals, and historical reports demonstrate this era. Characteristics: religious influence, moral instruction, simple writing style, historical documents. Major writers and their work. Annie Bradstreet, major work is the 10th Muse lately sprung up in America. Several poems compiled with great variety of wit and learning. Next writer is Edward Taylor, major work preparatory meditation, God's determination, revolutionary period 1775 to 1800. The revolutionary period focused on liberty, democracy, national identity. Literature inspired people to fight for independence from within. Characteristics: patriotism, political writing, democratic ideals and national identity. इसकी characteristics है patriotism है, political writing है, democratic ideals है और national identity है। मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क, बेंजामिन फ्रैंकलिन इस एज के मेजर राइटर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इनका मेजर वर्क है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड पुअर रिचर्ड्स एल्मनेक। नेक्स्ट राइटर इज थॉमस पेन, मेजर वर्क कॉमन सेंस एंड द अमेरिकन क्राइसिस। नेक्स्ट पीरियड इज द रोमांटिक पीरियड 1800 to 1865। अमेरिकन रोमांटिक एम्फेसाइज इमेजिनेशन, इमोशन, नेचर, इंडिविजुअल फ्रीडम। इसमें किस चीज को एम्फेसाइज किया गया है? इमेजिनेशन को, इमोशन को, नेचर को और इंडिविजुअल फ्रीडम को। इट आल्सो गिव राइज टू ट्रांसकेंडेंटलिज्म, इसने जो ट्रांसकेंडेंटलिज्म है उसको भी राइज किया। ट्रांसकेंडेंटलिज्म का मीनिंग है जो सुप्रीम पावर है, इसमें गॉड और नेचर को सुप्रीम पावर के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें हम नेचर को एक सुप्रीम पावर के साथ जोड़कर उसके साथ कनेक्शन को स्थापित कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स आर इमोशन ओवर रीजन, इसमें इमोशन को रीजन से ऊपर माना गया है। नेचर ट्रांसकेंडेंटलिज्म में नेचर के साथ कनेक्शन को शो किया जाता है, तो नेचर के साथ कनेक्शन है। इंडिविजुअल सेल्फ की बात की जाती है, इमेजिनेशन इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स है और सिंबोलिज्म है। Major writers and their work: Washington Irving, The Sketchbook, Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow. Next writer is Nathaniel Hawthorne, इनके जो ग्रेट वर्क है द स्कारलेट लेटर है, द हाउस ऑफ सेवन गबल्स है। और नेक्स्ट राइटर इज हरमन मेलविले, इनके मेजर वर्क है मोबी डिक एंड बिली बर्ड। राल्फ वाल्डो एमर्सन, मेजर वर्क इज नेचर एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट राइटर इज हेनरी डेविड थोरो, मेजर वर्क इज वाइल्डन एंड सिविल डिसोबीडियंस। Next writer is Edgar Allan Poe. His work are The Raven, The Telltale Heart, Fall of House of Users. Next period is realistic and naturalistic period, 1865 to 1914. After Civil War, writer focus on realistic portrayal of society, ordinary people, and social problems. The realistic and natural period is about society, ordinary people, and social problems. Characteristics of this time is real life situation, social criticism, objective narration, and psychological realism. Major writers and their works: Mark Twain, major work, The Adventure of Tom Sawyer, Adventure of Huckleberry Finn. Next writer is Henry James. Major work is The Portrait of a Lady, Turn of the Screw. And next writer is Stephen Crane. Major work The Red Butch and the Courage, Maggie, a Girl of Street. Next period is the modern period, 1914 to 1945. Modern American literature reflects the effect of industrialization, urbanization, and World War. Writer experimented with the narrative technique and explored the psychological complexities.
Next period is modern period, 1940 to 1945. Modern American literature reflect effect of industrialization, urbanization, and World War. Writer experimented with narrative technique and explored psychological complexities. Characters, characteristics, alienation, stream of consciousness, symbolism, fragmentation, and psychological exploration. Major writers of this age. Next period is the modern period. Modern American literature reflects the effect of industrialization, urbanization, and World War. Writer experimented with narrative techniques, explored psychological complexity. Modern period is related to industrialization, urbanization, and World War. The writers of this age experimented with narrative techniques and explored psychological complexities. Characteristics of this age is alienation, stream of consciousness, and symbolism, fragmentation, and psychological exploration. Major writers of this age: Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, A Farewell to Arm, For the Whole Bell Tolls, F. Scott Fitzgerald. His major works are The Great Gatsby, Tender in the Night. Next writer is William Faulkner. Major works are The Sound and the Fury, As I Lay Dying. Next period is contemporary American literature, 1945 to present time. Contemporary literature explore identity, gender, race, immigration, technology, globalization. Writer represent diverse voices and cultures. Characteristics of this period is diversity, multiculturalism, feminism, identity, social issues, experimental writing. Major writer and their works: Toni Morrison, his major work is Beloved, Song of Solomon. Maya Angelou, major work I Know Why the Caged Bird Sing, and Still I Rise. Alice Walker, major work is Color Purple. Major theme of American literature is freedom and democracy, the American dream, nature and wilderness, identity and self-discovery, race and equality, slavery and civil rights, family and society, war and conflict, hope and resilience. Now I reached at conclusion. American literature reflects the nation's journey from colonial settlement to multicultural global society. Each literary period introduced new ideas, style, theme, enriched the literary tradition from the religious writing of colonial period to the diverse voice of the contemporary literature. American authors have explored universal human experiences while shaping distinct national identity. Their works continue to influence readers, scholars, and writers around the world, making American literature an essential field of study for students of English literature and competitive examinations such as UGC NET, STAT, CTET, and other teaching exam. If you watch this video till end, I thank you for it. This video is about American literature, its different art, and all the writers which are discussed here is very important. We will discuss about major writers and their works in next videos. So thank you for watching these videos. Thank you.